I will answer all your question later. So Kafka broker. So why we need a Kafka, and what are the advantages and what is the concept of a broker basically, right? What is the need of a broker, correct? Majorly, जैसे हमने पहले भी बात किया है कि there are different ways to communicate from the service to service, या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन जो होता है, या इंटीग्रेशन जो होता है, देर इज अ मल्टीपल वेज वी कैन डू इट. सो देर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यू कैन फॉलो इट, करेक्ट? सो मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स यू कैन फॉलो, right? You can use a HTTP protocol where we can connect through a web client, REST client, all these. Or maybe you can also use that SFTP, FTP, or this kind of a file system based communication. करेक्ट? तो एक पर्टिकुलर सर्विस दूसरे सर्विस को एज अ एप्लीकेशन मे बी एज अ क्लाइंट सर्वर जैसे कम्युनिकेट करते हैं, वैसे आप कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट लाइब्रेरीज, राइट? दूसरा है कि मैसेजिंग वी कैन यूज इट, जो हमने बात कर रहे हैं अभी. और देन थर्ड इज फाइल सिस्टम, कि यू कैन यूज सम ऑफ दैट शेयर ड्राइव और एसएफटीपी एफटीपी सर्वर्स, यू कैन पुट इट, अदर सर्विस कैन पिक इट अप एंड रीड इट, राइट? अब ये सारी चीजों में, राइट, एवरी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन हैज अ स्पेसिफिक सिनेरियो, और उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ही हमें उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करना है, करेक्ट? और उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को यूज करना है. तो जब हम जो भी कम्युनिकेशन चैनल और प्रोटोकॉल यूज करेंगे, करेक्ट, उसके लिए क्लाइंट एंड सर्वर बोथ शुड बी एग्री. तो क्लाइंट भी एग्री होना चाहिए और सर्वर भी एग्री होना चाहिए, करेक्ट? कि हम इस पर्टिकुलर चैनल से इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करेंगे. बिकॉज ऐसा नहीं हो पाएगा कि यू आर सेइंग आई विल सेंड दैट HTTP रिक्वेस्ट एंड दैट सर्वर इज सेइंग नो नो आई विल टेक दैट ओनली मैसेज. So it is not like that, correct? So that is another thing. Is one more thing you need to understand it, कि when we are talking about especially for event driven architecture, right? So event driven architecture का concept ये है कि whenever there is a some event has been generated, you will perform some of the task here. और ये it's a very common terminologies and it will be implemented across different technologies, correct? It's a kind of one of that architectural concept, event driven architecture, and majorly we are using this kind of a setup when we are talking about especially for a asynchronous communication. Asynchronous communication के लिए हम जब भी बात करेंगे तो हम event driven architecture normally use करते हैं, right? So event driven architecture is a paradigm where the production, detection, consumption and reaction to the events are central to the operate of the software systems. तो अब इवेंट जब भी हम जनरेट करेंगे, यू नीड टू सेंड सम ऑफ द नोटिफिकेशन. अब सम इवेंट जनरेट हुई है या कुछ भी हैपन हुआ, लेट से इफ यू आर, जब भी आपने किसी साइट पे बुकिंग की, एट द सेम टाइम आपको कुछ तो इंटीमेशन भेजना है किसी और सिस्टम को, एक इवेंट हो गया है. जब भी कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया है, एक इवेंट हो गया. तो लाइक दिस there can be a different type of event can be generated, और उस event के base पे you are doing some work, correct? So that is his overall concept of your event driven architecture. Now when we are talking about overview of a microservice, so decoupled services, scalability and flexibility, and re resilience and fault isolation. तो माइक्रो सर्विसेज के 12 फैक्टर्स कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, बट इसके अलावा the overall advantage is basically decoupling of a services, right? So our small and independent services are there. Second point is scalability and the flexibility, easy to scale and easy to maintain the cost. And another thing is that faster time to market here. Resilience and fault isolation, failure of one service do not impact to the operation of other services. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अब व्हाट आर द इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर एंड द एडवांटेजेस है. एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, करेक्ट? सो दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है, एक तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होगा कि आपने रिक्वेस्ट भेजा, राइट, यू विल वेट फॉर अ रिस्पॉन्स एंड देन यू विल डू समथिंग. एसिंक्रोनस में एक बार आपने रिक्वेस्ट भेज दिया है, रिक्वेस्ट भेजने के बाद यू आर डूइंग समथिंग, then you are not bother about it कि when the response will come, correct? So like this, another thing is real time responsiveness.
So real time responsiveness is immediate response to the event, offering to real time updates and improve the user experience. अब एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं, लेट्स से कि देयर आर सम क्लाइंट लिस्ट विच यू आर सेविंग इनटू एनी अदर कैश, और उस पर्टिकुलर कैश को आप मल्टीपल अदर सर्विसेज आर यूजिंग इट. तो one particular service is deleting one of that customer here. So that has to be immediately deleted from the cache also. So when you are deleting from the database, and immediately we need to delete it from the cache. So that is the one of the scenario when you are saying that real-time responsiveness here. Correct? Scalability, event-driven system can be easily scaled to accommodate varying workload and the system demand. So it is very important point. And generally when we have that live stream data processing, right, and gaming applications, and where you have the majorly for real-time updates, real-time scenarios, if you wanted to capture, then these are the things we need to take care of. So there is a three things you need to understand here. One is the brokers, producer, and the consumers and event processor here. So what is the broker? Brokers are, right? So these three things are key components we need to discuss, right? Most powerful, you can say, and most easily used into an industry. So two most powerful brokers are RabbitMQ and the Kafka. And they have their own pros and cons. So there are some of that scenarios you can use a RabbitMQ, some of the scenarios you will use a Kafka here, correct? So event sourcing and event-driven messaging, right? So event sourcing, this involves capturing all changes to an application state as a sequence of recorded events, correct? And event-driven messages are used to communicate between the microservices, enabling events, right? And event-driven design patterns. So this is basically we will going to use and we will try to implement. And this same concept we will use into Saga implementation and different transaction, distributed transaction implementation between the microservices. And it is a very important concept. ठीक है? When we are talking about brokers, तो brokers क्या है? अभी जब आप मेजरली जैसे मैंने बताया कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट होगा टॉपिक्स एंड क्यू का, वो एक की कंपोनेंट मिस हो गया है. समथिंग वी कॉल्ड एज इवेंट प्रोसेसर के अंदर आएगा वो. तो ब्रोकर्स वो होते हैं. अभी आपको पहले क्या होता था जब J2E एप्लीकेशंस में एप्लीकेशन सर्वर में वी क्रिएट दैट टॉपिक्स एंड क्यू, एंड उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्वर से नॉर्मली जावा एप्लीकेशंस ही इंटरेक्ट कर पाती थी. Other .NET applications, Node.js, other type of application will not be able to communicate it, and they are not able to either produce the message or consume the messages. अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या है? जो मैसेज सेंड करेगा दे आर बिकम लाइक द प्रोड्यूसर, हु आर कंज्यूमिंग दे आर बेसिकली अ कंज्यूमर साइड, right? Either you can say receiver and sender also like this. So there are a different type of queues and topics and different ways of implementing it, right? So that is we'll going to discuss later. अब ये ब्रोकर्स नाउ इट इज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोकर्स की एक सेंट्रल पॉइंट है जहां पर आपका सर्वर है, जहां क्यूज आर बीइंग ऑलरेडी क्रिएटेड. एक सेंट्रल सर्वर में आपको एक चैनल दे दिया है, तो जब भी आपको किसी और एप्लीकेशन को मैसेज भेजना है, you can send the message to a central server, and the central server will send that message to a particularly into a other application, right? So let's say कि अब आपको ट्रेवल करना है यहाँ से दिल्ली, so definitely you will go through a flight. So in that scenario what you will do, you will go to an airport, and from the airport you will go and you will perform something like this, right? So that is the basically a channel we also need to be where these channels are basically available here. So अब RabbitMQ और Kafka के अलावा you can also use AWS broker also. So you can create a queues on AWS also. You can create a queues and you can say and the topics on the particularly on GCP or any other clouds also. So multiple brokers are available, correct? And one of the application can be producer, another application can be a consumer, or you can have a multiple producer, multiple consumers. ठीक है? तो इस तरीके से प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट हो सकता है, करेक्ट? इवेंट ड्रिवन मैंने आपको बताया, राइट? अभी चैलेंजेस को छोड़ देते हैं हम, करेक्ट? सो
यहाँ से ASP.NET की यदि पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन है तो ASP.NET का you can say you are just putting into a message into an event bus, maybe a Revit MQ on the Docker host, and then from here other application basically can consume it. तो मे बी ये .NET एप्लीकेशन हो सकती है, जावा एप्लीकेशन हो सकती है, Node.js एप्लीकेशन हो सकती है, और मे बी क्वारकस एप्लीकेशन हो सकते हैं. डिफरेंट अदर एप्लीकेशन कैन कनेक्ट टू these brokers, and then other type of consumer can be any kind of an application. तो एक feasibility हो गई है, any type of application can connect to any type of application. और ये बहुत बड़ा चैलेंज था जब हमारे लिगेसी एप्लीकेशन में हम लोग डील कर रहे थे. तो कम्युनिकेशन के लिए आपको स्पेसिफिकली अलग एक एंड पॉइंट्स डेवलप करना पड़ता था, एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट. बट ब्रोकर्स के आने से काफी सारे फैसिलिटीज बढ़ गई. अब काफका ही क्यों? काफका इज वेरी पावरफुल, राइट, फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, रियल टाइम प्रोसेसिंग, लाइव स्ट्रीम डेटा. For that, Kafka is very powerful. So Kafka has a many such advantages when we are trying to implement a Kafka here. Correct? So financial services, event-driven architecture, real-time transaction processing and updates. Maybe you can say for, especially for when you are doing something called trade applications and other applications, e-commerce, scalable order processing, inventory updates, personalized customer recommendations, IoT application, real-time data tracking, analysis, sensor-based trackings, correct? Event-based triggers, small devices and sensors. तो यहाँ पर हम ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर हम लोग यूज कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल, राइट. So scalability and resilience enhance user experience and challenges and the opportunities. Correct. So majorly we have just discuss about this real time concept here. Scenarios भी हमने discuss किए हैं कि where you will use a Kafka and how to use it. So majorly आपको ये पता होना चाहिए कि where you are, how and what is the meaning of the broker, where you are creating a queues, producer and the consumers, who is consuming the message, who is sending a message, and that where you are creating a queues, either a queues and there are a topics. So this is a basically a major concept when we are talking about particularly how you can use and implement the concept of a cup, or maybe any other Rabbit MQ like this. So we will discuss in the next here is how to implement Kafka with the Spring Boot here.